Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Hopefully you all will be fine and enjoying studying a lot at home. Today we will do practical number 4. Identify the different organs of human digestive system using given model. Also explain their functions. Let's start. Human digestive system is the system that is used for the process of digestion. What is digestion? Digestion is a process in which complex food material is broken down into smaller substances. Digestion is the process in which breakdown of food molecules occur so that it can be absorbed by the body and undigested food can be removed from the body. डाइजेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें फूड के बड़े बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल में चेंज किया जाता है. The digestion of food in humans takes place in the alimentary canal, which is a long tube extending from the mouth to the anus. फूड की डाइजेशन एलिमेंट्री कैनाल में होती है. दैट इज़ अ लॉन्ग ट्यूब जो कि मुंह से स्टार्ट होती है और एनएस पर ख़त्म होती है. नाउ द मेजर ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम. द मेजर ऑर्गन्स ऑफ डाइजेशन इन ह्यूमन्स आर फॉलोइंग. फर्स्ट वन, oral cavity. Second, food pipe or esophagus. Third, stomach. Fourth, small intestine. Fifth, large intestine. And the last one, anus. And the two glands that help in digestion are liver and pancreas. From where food digestion starts? Food digestion starts from mouth, means from oral cavity. Food is taken in through the mouth. It is chewed and mixed with saliva in oral cavity. फूड को हम माउथ में लेके जाते हैं, फिर इसको वहाँ पे चबाया जाता है और सलाइवा के साथ मिक्स किया जाता है. What is saliva? Saliva is a digestive juice secreted by salivary glands. Food digestion start in mouth, means in oral cavity. It is the first organ of digestive system. Now the chewed food enter into the food pipe that is called esophagus. Esophagus is a tube that carries food from mouth to stomach after you swallow. Esophagus is the second organ of digestion. Then from esophagus, food is slowly pushed into a bag-like structure called stomach. Stomach is another organ of digestion. While food is in the stomach, churning of food takes place and food is further broken down. The stomach also secretes mucus, gastric juices and hydrochloric acid. What is the role of hydrochloric acid secreted by stomach? It kills the bacteria in the food and makes the food acidic. Now, from the stomach, food then goes into a highly coiled tube called small intestine. Now, with the help of enzyme secreted from the liver and pancreas, further breakdown of food occur in small intestine. Small intestine receive the secretions from the liver and pancreas. What is secretion? Secretion are the juices which are produced by liver and pancreas. Liver produce bile juice and pancreas produce pancreatic juice. And with the help of these secretions, further breakdown of food occur in small intestine. Walls of small intestine also secrete juices which help them further in the digestion of food. The inner surface of small intestine has finger-like projection called villi. Villi have extensive network of blood vessels. The digested food is then passed into the blood vessel and undigested food is passed into the large intestine. स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल से भी जूसेस सिक्रीट होते हैं जो कि फूड की डाइजेशन में फर्दर हेल्प करते हैं. स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर सरफेस पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देती हैं. एंड दीज फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आर कॉल्ड विलाई.
इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम विलाई कहते हैं। एंड विलाई हैव एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स। विलाई में बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल्स होती हैं। डाइजेस्टेड फूड ब्लड वेसल्स में पास हो जाती है और जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो लार्ज इंटेस्टाइन में पास हो जाती है। लार्ज इंटेस्टाइन is an other organ of the digestive system. It is wider than small intestine. Large intestine is fatter than small intestine and it is almost the last stop on the digestive tract. Large intestine is about 5 feet if you spread it out. It means 1.5 meters. Large intestine स्मॉल इंटेस्टाइन से ज़्यादा वाइडर होती है, मीन्स उससे ज़्यादा मोटी होती है। और अगर हम इसको सेपरेट करें तो ये 1.5 मीटर लॉन्ग होती है, मीन्स 5 फीट। और ये डाइजेस्टिव ट्रैक का लास्ट स्टॉप होती है। एक्सेस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट इन द फूड आर एब्जॉर्ब इन लार्ज इंटेस्टाइन। फूड में एक्सेस वाटर और सॉल्ट की एब्जॉर्प्शन लार्ज इंटेस्टाइन में होती है। And then at the last, undigested food or waste from the large intestine is then passed out of the body from anus through rectum. लार्ज इंटेस्टाइन में अनडाइजेस्टेड फूड को रेक्टम के थ्रू बॉडी से पास आउट कर दिया जाता है। थैंक यू सो मच।